जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करेगी प्रिजन सेटल। मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट लीगल इशू जो प्रेजेंट टाइम डिस्कशन में चल रहा है। वो ये कि जब भी हम स्पाउशल प्राइवेसी की बात करते हैं तो उसका स्कोप और एक्सटेंट कितना है। रिसेंटली मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस स्वामीनाथन ने एक वर्डिक्ट दिया जिसमें इलाबोरेशन में उन्होंने बोला कि क्या अमाउंट करेगा क्रुएलिटी में एंड क्या अमाउंट करेगा क्रुएलिटी में नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि वेदर विमेन हु इज वॉचिंग पॉर्न मूवीज is amount to cruelty against the husband and he can seek divorce। यहाँ पर इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड बता रही हूँ इस केस का, जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ के बीच एक पिटीशन आता है फैमिली कोर्ट में फ्रॉम द साइड ऑफ वाइफ। रिमेन था कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स कराना है, जिसको हस्बैंड ने ऑब्जेक्ट किया और उसके कॉन्ट्रडिक्शन में हस्बैंड ने डिफेंस लिया क्रुएलिटी के ग्राउंड पर डिवोर्स के लिए। हस्बैंड सेड दैट आई एम हैविंग राइट टू क्लेम डिवोर्स अंडर सेक्शन 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 5 as well as 13(1) 1A, wherein we have the amounts which are the amounts of venereal disease of communicable form and the amounting to cruelty respectively। इन दोनों ही ग्राउंड्स पर हस्बैंड ने डिवोर्स की पिटीशन फाइल करा उस रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की रेमेडी के अगेंस्ट। इसमें फैमिली कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया उसमें हस्बैंड की दोनों ही क्लेम को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि द एलिगेशंस व्हिच इज मेड बाय द हस्बैंड कैन नॉट बी सब्सटेंशिएटेड। अपील फाइल होती है हस्बैंड के थ्रू और वो मद्रास हाई कोर्ट में पहुंचते हैं। मद्रास हाई कोर्ट में यही सेम लीगल इशू डिस्कस होता है कि वेदर अ विमेन हु इज वॉचिंग पॉर्न मूवीज व्हिच इज शी इज इन हैबिट ऑफ वॉचिंग दोस कंटेंट कैन अमाउंट टू क्रुएलिटी अगेंस्ट द हस्बैंड और नॉट, एंड द सेकंड वन वेदर अ विमेन हु इज सब्जेक्टेड टू वेनरल डिजीज इज अमाउंटिंग टू द डिवोर्स और नॉट। For the claim of the disease of venereal disease of communicable form, section 13(1) subclause 5 is to be placed. Court has held that the husband failed to prove the contents that the wife was suffering from such kind of disease. When the husband failed to prove this, it becomes very objectionable that the court is granting the decree of divorce for the claim of venereal disease. That also amounts to the violation of right to privacy. Further, the court elaborated the concept of spousal privacy. The court has to decide whether this woman is said to be violating the right of husband in conjugal relation or not. The court has taken the reference of various judgment. I would refer only two important judgments here. One, that is Justice Puttaswamy versus Union of India 2017 Supreme Court, where the court has clarified that right to privacy is a fundamental right. To elaborate the same provisions, we have one more case law, and we have the case of the Supreme Court, that is Rajiv Ratori versus Union of India 2024 Supreme Court. इस केस में सुप्रीम कोर्ट के पास वही क्वेश्चन था कि क्या स्पाउसल प्राइवेसी इज हैविंग सम ऑफ सिग्निफिकेंस टू डिसाइड द मैटर। The court clarified that even if the husband or wife has gone to the another relation of marriage, it doesn't mean that husband or wife has lost the right to privacy. The wife still can claim the spousal privacy. She is still having the right of sexual orientation as well as free choice of herself what to do. So, the court clarified in this Rajiv Ratori that the marriage is not something which is going to seize the right of women for spousal privacy. She can still claim the same right. So taking these two case laws together, the Madras High Court Justice Swaminathan has elaborated and concluded in the case of X versus XX 2025 that watching porn movies by the wife does not amount to cruelty against the husband, since she is not compelling the husband to do the same.
Further, the court said, if any content is watched by a person which is prohibited by any state regulation, that can be the case of someone else that is to be dealt with. But there is not such a case. So the court has accepted the plea of wife and rejected the plea of husband. And the decree for divorce has not been granted in the case in both of these two grounds. In one of the grounds that I already discussed with you, that the disease which is venereal disease of communicable form, the court rejected that the husband has failed to prove this fact. Second, about that the wife is doing something which is immoral again according to the husband, the court said that what is moral, what is immoral, it is to be decided by the parameter of constitutional morality, not from the glances of the person who is saying that it is immoral. So the conclusion remark of the court in this case is that women who has addiction, who has the habit of watching porn movies, even the four wall of the rooms, it does not amount to cruelty against the husband. Husband will not be granted divorce on that ground. This is all for today. Thanks for watching this. Subscribe for more content.